Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, and we are here on our regular weekly Wednesday meet. And the topic for today is Gyan, the secret of life. We are discussing the teachings of Buddha, and in this series we are going to discuss on the secret of life as taught by Buddha. So anybody who has any idea of what the topic is about, what is your interpretation of that secret of life? So when we talk of secret of life, first let us look at what is the reality of life. लाइफ हमको मालूम है, हम जो जी रहे हैं लाइफ, है ना? तो इसका सीक्रेट तो हम बाद में ढूंढेंगे, रहस्य बाद में ढूंढेंगे, पहले तो उसकी सच्चाई तो ढूंढ लें. हाँ, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. तो हु वांट्स टू शेयर लाइफ का सच क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ? What is life and what is the truth of life? Let us start with that. We are all living, so we all know what life is, right? And hopefully all of us are alive. Yes. And all of us are living a life, so we know what life is. So what is the reality of life? Let's start from there. कौन बोलना चाहेंगे? Meanwhile, let me welcome Hansara ji. Hansara ji, you just joined. Welcome. Be in the session. If you want to introduce yourself or if you want to share anything, please feel free to do that. Yes. So Vijay ji और निवेदिता जी क्या बोलते हैं? What is life? What is life? What is the truth of life? Sir, I guess life is about trying to achieve nirvana as far as Buddha is concerned. नहीं, वो तो ठीक है, वो तो गोल हो गया. मैं कह रहा हूँ सच्चाई क्या है? ओके, so you say that the truth of life is to attain nirvana. That's what you mean. Okay, so that is the sole purpose. How many of us are actually following that? We have so many goals in life. Sir, may I try? Yeah, sure. Welcome. I feel life is new experiences. Every day we are facing something, we are learning something new, right from our childhood. Every day a new experience, right? Means like learning to walk, learning to eat, learning to talk, learning to socialize, learning to make friends, learning to protect ourselves, everything. These are the experiences that we are gaining every day in this life. Also challenges as we grow up. Right from beginning only, from even the children have their challenges of their own kind. Till our old age, we have challenges, and we are supposed to find solution to those challenges and to overcome them. And when we overcome them, we realize that we are capable of doing that. Even if it is a very difficult task for us, initially we feel that it is very difficult for us, how we will do it. We are we get nervous also, we get scared also, but then we realize that we have the capability of doing everything if we want to. Okay, very good. This is how life, for me, life is this. Perfect. Let's acknowledge Rima ji. That is her experience of life. Yes. Thank you, sir. This is what is happening in life. This is what is happening to you in life, and this is how you are responding to life. But what is the truth behind it? If you look more into this, if you look deeper into instead of doing part, into the being part. Okay. So what you said is things are happening to me and I'm doing something and I'm learning something, and that is how life is. Absolutely perfect. That is what is happening in life. The truth of life is what? आपने तो इस लाइफ टाइम की बात की. अगर मैं बोलूं कि you are an old soul of maybe 10,000 years, and this is just a small interval. This lifespan of 100 years, 80 years is just a small interval. आप कई जन्मों से चले आ रहे हैं, बर्थ पे बर्थ लिए जा रहे हैं, एंड आगे भी बहुत सारे बर्थ लेने की उम्मीद है. Till you achieve whatever Vijay ji said, nirvana. So till you achieve nirvana, you must be having some more, many more lifetimes to achieve that. So it's a long journey. आप एक सोल हैं और एक बहुत लंबी जर्नी पे हैं, right? And in this life form, you are explained very well what you are experiencing.
इन एवरी लाइफ फॉर्म यू मस्ट हैव डन दैट। आप हर लाइफ फॉर्म में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो आप कुछ अपने कर्म और अपने संस्कार को लेके आए हैं पिछले जन्म से। इस जन्म में उसको थोड़ा सा शुद्धिकरण करेंगे और उसको लेके अगले जन्म में जाएंगे। दैट इज व्हाट इज द रियलिटी और द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ओके, सो यू आर ए सोल ऑन ए लॉन्ग जर्नी in this life form. In this life form, I am Shashi Dhar and you are Rima ji and you are Vijay ji. So in this life form, that means 80 to 100 years. Correct? इससे पहले 100 साल पहले, या जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, उससे पहले मैं शशिधर नहीं था, लेकिन मैं किसी ना किसी लाइफ फॉर्म में था। और एक दिन जब मैं ये लाइफ फॉर्म छोड़ दूंगा तो भी मैं रहूंगा, लेकिन किसी और लाइफ फॉर्म में हूँगा। तो इस लाइफ फॉर्म में मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसका इम्प्रिंट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, कार्मिक इम्प्रिंट जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड वो अगले जन्म में, अगले लाइफ टाइम में साथ में जाएगा मेरे सबकॉन्शियस माइंड। So that is the truth of life. Correct? Everybody okay with this explanation? I hope there is no controversy or no discussion required for this. Okay, good. So the reality of life क्या है? Reality of life ये है, I am a soul on a long journey. Correct? And based on my karma, I have experiences in my life. बाहर की दुनिया से जो कुछ आ रहा है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, यही चीजें आ रही हैं बाहर से। बाहर की दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी काम कर रहे हैं या तो किसी वस्तु के लिए, या किसी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन, परिस्थिति के लिए। तो बाहर की दुनिया से ये हमको मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है हमको? हमारे कर्मों के मुताबिक। तो बेस्ड ऑन अवर कर्मा वी आर हैविंग एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंड वी आर हैविंग पीपल हु आर एंटरिंग अवर लाइफ एंड एग्जिटिंग अवर लाइफ based on our karmic equation with those people or with those souls, maybe from the previous birth or maybe a fresh start in this birth. तो जो हमारी कार्मिक रिलेशनशिप है उनके साथ, उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, बेस्ड ऑन अवर कार्मिक रिलेशनशिप विद दोज सोल्स। एंड लाइफ टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी टू improve my karmic balance, to get rid of my vikars and move forward on the spiritual journey, and ultimately, जैसे विजय जी ने कहा, to attain moksha, nirvana, kaivalyam, whatever you want to say. So that is the truth. Correct? Now when Buddha said what is the secret of life, what he said was life is a preparation. Okay, just let me complete the sentence what he said. So life is a preparation and examination is or death is a examination. तो अगर हमने, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो हमारा एग्जाम कैसे जाएगा? बहुत बढ़िया जाएगा। तो लाइफ टाइम में हम प्रिपेयर कर रहे हैं टू एक्सपीरियंस डेथ इन ए परफेक्ट वे, सो दैट वी कैन इजीली मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइफ फॉर्म विथ लॉट ऑफ डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। तो डिविनिटी की तो खैर बात नहीं की बुद्ध ने, बट दैट इज हाउ आई understand from my understanding, because he never said there is any soul or there is any God. He only said there is the Buddha in you. That means awakened self is there in you, and उसी को surrender करना है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, that's what he taught you. So surrender to the Buddha in you. There is an awakened self in you. So don't look for outside, look within. So that we can call as Atma only, though he never said that. Okay. So I will say divine grace and blessings के साथ आपको वो अनुभव होगा। करेक्ट? बट हमको करना क्या है? हमको अपनी लाइफ में सही प्रिपरेशन करनी है। सही प्रिपरेशन का मतलब क्या है? सही कर्म करने। बिकॉज बुद्धा ऑलवेज टॉट ऑफ ओनली वन थिंग, आपके कर्म कैसे हैं, दैट इज हाउ यू विल एक्सपीरियंस लाइफ, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस लाइफ इवन विद द बॉडी और विदाउट द बॉडी। शरीर छोड़ दोगे तो भी आपके कर्मों के हिसाब से ही आपका अगला एक्सपीरियंस होगा, विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट इन द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्मा। करेक्ट? सो अंडरस्टैंड इट दिस वे। अगर मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर मेरा वेकिंग डे, पूरा दिन में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो मेरे को रात की नींद बड़ी अच्छी होगी। तो रात की नींद के लिए स्ट्रगल नहीं करना, जागते हुए मैं क्या कर्म कर रहा हूँ उसको सही कर लूँ मैं, तो रात को अच्छी नींद आएगी। एग्जैक्टली द सेम लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उस कर्मा को ध्यान में रखें तो जो एग्जामिनेशन होगा डेथ का, वो हम आसानी से पार कर लेंगे। डेथ इज गोइंग टू बी पेनफुल, अंडरस्टैंड दिस। एक लाइफ फॉर्म छोड़ के दूसरे लाइफ फॉर्म में जा रहे हैं तो तकलीफ तो होगी। क्यों? ज्यादातर कैसे होता है?
डेथ का एक्सपीरियंस कैसा होता है? मे बी एन इंजरी, एक्सीडेंट, क्योंकि बॉडी हैज टू बी हार्म्ड इन सम वे, राइट? बॉडी को हैज टू बी इंजर्ड, तो या तो बीमार होगा, या तो शरीर में कोई बीमारी आएगी, या शरीर को अकस्मात कोई चोट लग जाएगी। तो एक्सीडेंट, इंजरी और डिजीज, दैट इज हाउ वी नॉर्मली live the life form, correct? But life will continue, क्योंकि सोल की जर्नी कंटिन्यूड है, सोल कभी नहीं मरता है ना। तो लाइफ विल ऑलवेज कंटिन्यू, लाइफ फॉर्म विल चेंज, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो लाइफ की अगर रियलिटी मैं बोलूँ, ये है कि हम एक लाइफ फॉर्म में अभी हैं, और इस लाइफ फॉर्म को जब हम छोड़ के दूसरे लाइफ फॉर्म में जाएंगे तो वो पेनफुल एक्सपीरियंस होगा, करेक्ट? वो पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। उसकी तैयारी अगर हम अच्छी कर लें तो मे बी वी विल पास दैट एग्जामिनेशन विथ फुल मार्क्स। तो पेन नहीं रहेगा, आराम से जाओगे। मे बी यू कैन, लाइक ऑल द गुरुज एंड द ज्ञानी सोल्स डू दैट, महात्मा लोग करते हैं, समाधि में चले जाते हैं, मेडिटेशन में बैठे और शरीर छोड़ दिया आसानी से। क्यों? उनके जीते जी उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए थे कि वो ट्रांसफर जो है, या ट्रांसफर जो है, एक लाइफ फॉर्म से दूसरे लाइफ फॉर्म का जो ट्रांजिशन है वो बहुत आसानी से हो गया। कर्म खराब है तो क्या होगा? कर्म खराब हो तो क्या होगा? आईसीयू, चले जा रहे हैं, कोमा, सफरिंग कंटिन्यूस, मंथ्स, अपाहिज हो गए। हाँ, होता है बैकबोन इंजरी, फाइनल इंजरी हो गई है, यू आर बेड रिटन, यू कांट मूव, यू कांट डू एनीथिंग, यू आर फुल्ली अवेयर, यू आर फुल्ली कॉन्शियस एंड यू आर सफरिंग, पेनफुल। 6 महीना, 1 महीना, 5 साल, 10 साल, कई लोगों को तो मैंने देखा पैदा होते ही ऐसी बीमारी आ जाती है कि वो पूरे जीवन काल में 30-40 साल की उनकी अगर लाइफ है, पूरे 30-40 साल दे आर स्ट्रगलिंग, बेड रिटन। तो ये क्या है? कर्मों का फल है, जिससे ऐसी लाइफ मिली है, राइट? सो व्हाट वी डू इन आवर waking hours, or what we do in our life actually will decide how we are going to make the transition into the next life form. Understand this? So what is the reality of life? The reality of life, or the truth of life, is death. If we can pass this test with full marks, we have done a good job in our life, and then the journey continues peacefully and easily. So before I move on to the next topic or next level of wisdom, let us have some people share what is opening up. Yes, Vijay ji. सर पास और फेल का तो मतलब ही नहीं बनता, राम नाम तो सत्य होना ही है। जरूरी नहीं है सर। Just because you live a life form doesn't make you a saint. If you are a sinner, you will be born as a sinner. नहीं, पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज डेथ इज फॉर श्योर। हाँ, डेथ इज फॉर श्योर, पर वो पेनफुल होगा, पेनफुल होगा जैसे मैंने अभी बताया, या पेनलेस होगा। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन. सो लाइफ इज एन प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन. Consider it that way and you will live a very, very happy life, because you know whatever you do in your life is going to decide the final moment of your transition. Final moment of not life, final moment of this life form, which means transition to the next life form. जर्नी तो कंटिन्यूड रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा पेन इसी ट्रांजिशन में आता है, when you are living one life form and going to the next life form. And we will analyze more into this. What does death mean to us? We will look into that with more details, but after I take the sharings from people. Yes, Harsh ji, you want to say something? Go ahead. नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक आचार्य प्रशांत नाम से यूट्यूब पर एक आचार्य जी के लेक्चर कई बार मैं सुनता हूँ। उनका कहना है कि आत्मा होती ही नहीं है। बुद्ध ने भी यही कहा था, आत्मा नहीं होती है। हाँ जी, बुद्ध ने भी यही कहा था, आत्मा नहीं होती है। अच्छा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बुद्ध की टीचिंग होगी, दैट्स ओके। आत्मा हो या ना हो, आप शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले रहे हैं। और बुद्ध का इसका क्लैरिफिकेशन ये था, आप आम खाते हो और उसके बाद आम की गुठली फेंक देते हो, उससे दूसरा आम का पेड़ पैदा हो जाता है। तो उसमें कोई आत्मा हो या ना हो, लाइफ फॉर्म विल मल्टीप्लाई। एक लाइफ फॉर्म से दूसरा लाइफ फॉर्म आ ही जाता है। तो वो आत्मा की बात नहीं मानते थे, बट अगर आप आत्मा की बात मानते हो तो आप मान लो, यू आर ए सोल ऑन ए जर्नी।
कंसेप्ट जो मर्जी हो, रियलिटी वही है। लाइफ का रियलिटी डेथ है, और डेथ को कैसे फेस करना है उसके लिए आपको लाइफ को सही ढंग से जीना होगा, सही कर्मों के साथ। दिस इज व्हाट बुद्ध आल्सो सेड, करेक्ट? तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, हर्ष जी। ओके, हर्ष तनेजा जी, वेरी वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज। That's a good point. In fact, I said before only, the Buddha never said talked of God and soul. वो कहते हैं ना मैंने देखा है ना मुझे मालूम है, इसलिए I will not talk of that. I will talk of what is my experience. And he saw his lifetimes. अपनी जब वो निर्वाणा को, मतलब जब वो एनलाइटनमेंट के रास्ते पे थे, तो he saw all his lifetime. So he knew पहला पास्ट बर्थ भी था, एंड सारे पास्ट बर्थ उन्होंने देखे अपने। In a fraction of a second he could see everything. So past lives तो है। तो आप सोल की जर्नी मान ले उसे, या वैसे ही जर्नी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मों की जर्नी मान ले। वो कहते जब तक आप अपने चित्त को साफ नहीं कर लेते, चित्त को पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक आप जन्म पे जन्म लेते रहोगे। दैट वाज हिज फिलॉसफी, व्हिच इज ओके। Even in our Vedanta and our other Hindu philosophy, we say that a soul takes different forms, ultimately to attain moksha, which is fine. Yes. Anybody else who has any discussion, any point of discussion? Meanwhile, let me welcome Kishore Achra ji, welcome. Amit ji, welcome. Rekha ji, welcome. ज्योति जी एंड आईफोन। आईफोन कौन है? नाम बताएंगे अगर तो बेहतर होगा। वेलकम बाय द वे। यस, गीता जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? निवेदिता जी, Yeah, any I topic? was just, yes, I was thinking, so you were talking about some children because of they're born with a problem or a disease. So that is the past karma ka, whatever. It's something like a punishment that they've got for their bad karmas of the previous birth, right? But उसके साथ उसकी मम्मी और पापा का भी तो कर्मा खराब, मतलब मे बी उनका भी तो कर्मा खराब हुआ होगा, that they have a child who has these issues and therefore उनकी लाइफ भी impacted है। बिल्कुल बिल्कुल है। So, okay. See, that soul decided to take birth to those parents only. Why? Because there is a very strong karmic relation. 800 करोड़ लोगों में वही 2 लोग मिले थे उसको, हाँ, तो वो they had to, कार्मिक इक्वेशन वहीं पे फिट हो रही थी। See, it वही is तो like a child who passes 12th examination with a particular percentage will get admission, is eligible for an admission in a university only of where that marks are acceptable, right? तो जहां आपके कर्मस जितने जिस लेवल के होंगे, उसी लेवल के पेरेंट्स के साथ आपका आपका बर्थ होगा। कौन सी आजकल कंडीशन में आप बॉर्न हो रहे हो, किस पेरेंट्स के साथ बॉर्न हो रहे हो, किस सिटी में बॉर्न हो रहे हो, ये सब आपके कर्मस डिसाइड करेंगे। so these days people are saying that the couples are postponing childbirth and they're into a lot of artificial things and alcohol, smoking and drugs and all that, which is impacting the child genetically. So is it karma of the present birth or the previous birth? बच्चे की क्या गलती अगर मम्मी पापा ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग? बच्चे ने वही मार्क्स लाया है, इसीलिए उसे उसी वही यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसको वही पेरेंट्स मिलने चाहिए, उतना ही उसका डिजर्विंग लेवल है, इसीलिए वो वहां पैदा होगा। Somebody will be born as a slum, in a slum area, to a parents who are alcoholic and abusive, and he So will be it's deformed, and he will be deformed and he may be abandoned। ये सब होगा क्यों? उसके कर्म ऐसे हैं। और और कुछ वो जिन पेरेंट्स का लोगों भी का दिव्य कर्म है, जो दिव्य सोल है, जो बिल्कुल परफेक्ट कर्म है, वो फिर चांदी के चम्मच लेके पैदा होंगे अंबानी के घर में या अमिताभ बच्चन के घर में, है ना? वहां बहुत शोरू है वहां पे जो भी है, एटलीस्ट कंफर्ट हाँ, रहेगा। हाँ, तो सी, comfort बर्थ है, कर्मास क्या डिसाइड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल योर फिजिकल बॉडी, आप किस राइट, बॉडी के साथ पैदा होंगे, ये कर्मास है। किस पेरेंट्स के वहां पैदा होंगे, ये कर्मा है। आपका चाइल्डहुड कैसे बीतेगा, यानी कि आप शुरू के 4-5 साल या 6-7 साल कैसे साथ साथ बीतेंगे, ये कर्मा है, राइट? So all the good deeds that you do will actually decide how you are going to, then what is the kind of education that you're going to, what are the kind of people whom you are going to attract. All is karma, everything is cause and effect. So it is multiple causes and multiple effects. It is not so easy. Single input single output नहीं है। तो आपको नहीं मालूम कौन से जन्म का कौन सा कर्म आपको लेके आज आया है यहाँ पे, और आप यहाँ पे ये अटेंड कर रहे हो। You never know. Yes, but having given the situation, now make the best of it. चलो, That is how you live your life perfectly. Yes,
Very good, Geeta ji. Let's acknowledge Geeta ji. Yes, Nima ji, you want to share something? Go ahead. Nima ji, you want to share something? I just want to know, I just want to ask कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान completely प्योर कर्मा कर रहा है थ्रू आउट द लाइफ? बिकॉज कर्मा को तो हर तरह से बोला जाता है कि सोच भी कर्मा है। अगर बिल्कुल। हम गलत सोच रहे हैं दैट इज ऑल्सो कर्मा, है ना? तो Yes. गलत सोच भी कर्मा में ऐड हो गया। तो इन दैट केस तो एक ह्यूमन बीइंग being a human being and living in a society or the environment whatever it is, कोई भी ऐसा क्या हो सकता है क्या कि वो कभी कुछ गलत सोचा ही ना हो या कुछ गलत मतलब किया ही ना हो? तो कर्मा तो बैड, तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ तो बैड और कुछ ना कुछ तो गुड। गुड तो है लेकिन बैड भी तो होता ही है। तो Very good, Nima ji. That's a very उस good point. हिसाब से कैसे डिसाइड करते हैं कि कर्मा ज्यादा खराब है या ज्यादा अच्छा किया है? Very good. Let's acknowledge Nima ji. That's a very good question, actually. So let me answer that in a slightly different way. Okay. Nima ji, और कुछ है क्या? Otherwise, you can lower your hand. Yeah. So let us understand in this way. When a soul starts the journey, soul सुप्त अवस्था में होता है. That means we are all sleepwalking in our life. Then a moment comes in one particular lifetime when you become awake. Correct? तो आप सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाते हो। जब तक सुप्त अवस्था में थे तब तक आप बहुत ही खराब कर्म कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यू आर स्लीप वॉकिंग. You might have committed murder, you might have committed fraud, or you could have been, you can imagine whatever level of things that you have been doing because you are sleeping. आप सुप्त अवस्था में हैं, that means there is no awakening. Soul calling है ही नहीं. आप अपने क्या बोल सकते हैं, तामसिक नेचर और राजसिक नेचर के मुताबिक आप एक्शंस कर रहे थे. तो सारे एक्शंस तीनों कैटेगरी में आते हैं ना हमारे, तामसिक, राजसिक और सात्विक. पर जब आप जागृत हो जाते हो तब आपके पास एक चॉइस रहती है. नाउ यू नो कि मेरे को तामसिक नहीं करना है, मुझे राजसिक से बाहर निकलना है और मुझे सात्विक कर्म करने हैं. ये अवेयरनेस जब आ जाती है देन यू विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. सो दैट इज द जर्नी व्हेन यू कॉन्शियस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अवेकनिंग. तो स्वयं को जगाने की जो क्षमता है उसी को बुद्ध कहते हैं. Buddha's teaching, what Buddha says is, Buddham Sharanam Gacchami. What does it mean actually? It means स्वयं को सुप्त अवस्था से निकाल के जागृत करने की अवस्था में, यानी कि जब आप अवेकनिंग लाते हो अपने अंदर, इस क्षमता को बुद्ध कहा गया है. तो उन्होंने कहा ये रत्न आपके अंदर है. Every soul has this innate inborn quality of awakening. पर वो कौन से जन्म में किस मोमेंट में होगा नहीं मालूम. So Buddha also started with a lot of suffering, right? He was living like a prince, but then he was always suffering because he saw, जब उसने sufferings देखे दुनिया में, तो he was full of compassion and full of sorrow कि ये दुनिया ऐसी कैसे हो सकती है. There has to be a way out. Then he started his journey. So his journey actually started when he was maybe around young age, right? When he was more than a teenager, he got married and then he started his journey. Correct? तो जब आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, when you are awakened, then you will not do this karma. Rima ji, that is the answer for you. Till then you might be doing many things, but then having done that, there will be consequences which will come to you. So be ready to face that. Be ready to accept and face the consequences of all that you have done when you were sleeping. But now since you are awake, you will not repeat those and you will move out of that very fast. तो आपकी स्पिरिचुअल साधना, आपकी सेवा, आपका सत्संग ये डिसाइड करेगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे आगे बढ़ रही है. तो दिक्कतें जो आएंगी वो इसलिए आएंगी क्योंकि आपके पीछे आप कर्म बहुत बुरा करके आए हैं. पर जैसे जैसे वो न्यूट्रलाइज होगा, यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन योर जर्नी. So that is in line with what Buddha also said. Correct? So again, to emphasize the reality of life, secret of life बाद में आएंगे. Reality of life क्या है? The reality of life is death. How you face death or how you understand death is very, very important to live an effective life. So let us have a discussion on
what does death mean to us? What does death mean to me? If I die, what will happen? What am I scared of? Let us look into that. And if someone else die, what I am facing? Let's have some discussion on that. That will give us more insights into what is life and what is death. Theoretically तो हमने देख लिया कि आत्मा मरती नहीं है, तो सोल नहीं मर रहा है. जो मर रहा है वो लाइफ फॉर्म है. लाइफ नहीं मरती है. Life will continue. Life is eternal. Am I okay? Am I audible? Hello? Hello, am I audible? ये तो आवाज भी नहीं आ रही. हाँ अब. Hello, am I audible? I think now, if you speak. Yes, sir. Yeah, sir. Yes, Okay, sir. so I got frozen. Everybody was frozen, so I thought I knew that my network was gone. So is it okay now? Right. So we were talking of Yes, sir. how is life appearing to us and how is death appearing to us. What are we afraid of? What are we scared of death? Or why are we afraid of death? What does death mean to us? अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा? और मेरी लाइफ में अगर कोई और है जो अगर वो मर जाए तो क्या होगा? But what we need to understand is the wisdom part is the soul will never die. The energy never dies because energy can never be destroyed. It is the life form which is It changes the form. changing the form. Life form changes. यानी कि आप छोड़ना ट्रांजिशन में हो, एक फॉर्म छोड़ के दूसरे फॉर्म में जाओगे और उसमें तकलीफ हो सकती है. ठीक है जी? So that is what is the reality of life. Everybody okay with this? So let us have Yes. some discussion. And meanwhile, let me also welcome Vimi Kurana ji. Welcome. Anything? Guests who have come for the first time, if you want to share something, please raise your hand and share whenever you feel it is appropriate for you. Yes. कौन बोलना चाह रहे थे? गीता जी, विजय जी, निवेदिता जी. Yes. Can I? Yeah. Go ahead. So there is this book by Dr. Brian Weiss. It talks about, my father, if I'm very fond of my father, so maybe it is a cluster of souls that move together. And if I love my father very much, previous birth, he may be loving me very much. If I hurt him or harm me, maybe the next the Janma is going to be just the opposite. So is that really true? There's another thing that we talk about these, like my father used to always say, there's always a ripple effect of whatever you do. अगर तुमने गंदी जगह गोलगप्पे खा लिए तुम्हारा शाम तक पेट खराब हो जाएगा, पर अगर तुम कॉन्स्टेंटली फास्ट फूड और जंक फूड और उल्टा सीधा खाते रहोगे तो तुम्हारे को 20 साल के बाद तुम्हारी घुटने बोल जाएंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे. So in a way, so it is, life is all about preparation for what I want to be tomorrow. So if I prepare, like I prepare for an exam, likewise, if I prepare for that final exam, which is death or whatever, I don't know what's there in store for me, but if I make it very well, it's going to be good. Absolutely. So why Perfect. death should not be scaring me, but death of a person I depend on or rely on or I'm very, very madly connected to, like in terms of love and all, children, husband. So that could impact you badly. But otherwise, जो हमें जाना है, and if I prepared myself well, तो जाना तो fine है, it's perfectly fine. सदगुरु बोलते हैं ना कि every night when you sleep, you should think that is, that's a temporary death for you, and you should leave everything, all your good and bad things here, and then move on. Absolutely. So, Right. Perfect. Perfect. So you can actually consider that every night you are dead, yeah, and every morning you are awake. Only thing is, since you are coming back in the same form, there is a continuity of memory. right. When you change the form, there is no memory, there is no continuity, so you start fresh. It seems so. Shashi ji, when you see some people, you meet some people, you feel that you met them earlier. Is this something to do with a soul connection? Yeah, it is all soul connection. At the soul level, you have met before and you are remembering it. Maybe good or maybe bad. You've seen that in many Bollywood movies. Huh? I always say Bollywood is very spiritual. Yes. Okay, good. Let's acknowledge Gita ji. That's a very good point. Point taken. It is all karma. How you are, what you are doing right now will definitely depend and will make your future interactions accordingly. It is all cause and effect. It is all karma. Yes. Yes, Nivedita, you wanted to share something. Go ahead.
आप नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं, आप दोबारा से लॉग इन करो। ठीक है, ठीक है, ओके। मीनवाइल विजय जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? Shashidhar ji, just to continue on what Geeta ji was saying, Hmm. a lot of attachment with kids or parents or anybody else, that's where my thought process differs a bit. Because for me, it has, I am a firm believer of detachment, and I mean, accepting that each soul has its journey. So just like you have to go, they will have their journey. Right. So having this thought while you are in your last, that what's gonna happen to them or to anybody else is not necessary in my. Okay, that's fine. But let us understand this in a very, very specific, clear manner. See, there are two aspects of death, when how we experience it. Okay, obviously, to say that in a lighter vein, it is said, when you are dead, you are dead. It is very painful for the other people. And by the Absolutely. way, it is the same thing when you are stupid. Right. Very true. Very, very true. Okay, so coming back to the main point, when I am dead and gone, I am not worried about it. Correct? It is the others who have to face it. To suffer, Similarly, when yes. somebody else who is very close to me or with whom I am attached to, maybe my wife or my parents or my close friends or my son or my children, that way I'm so attached to them that if they leave, up death ki baat chhod do, they are going to a hostel, even that can give Yeah, me pain if I am attached to absolutely. that person, right? Right. So attachment is the reason for all the pain Pain, and the suffering. suffering that we are experiencing. And if you Absolutely. can practice detachment, then you will be slightly reducing the impact. I'm very, very carefully choosing the words reducing the impact, because impact is definitely going to be there. It is all theory if you say that I am not afraid of death. Okay, इंसान अगर जिंदा है तो उसका सबसे बड़ा fear of death है. And he himself has to Shashidhar ji, I don't experience. believe in this. I don't believe in this. Don't believe it, just consider it. Okay. ठीक है जी. So fear of death is the biggest fear, because every other fear is rooted in this fear of death. Fear of death means what? Your body consciousness. My body, I am attached to my body, and ये attachment इतना strong है कि आपका ego वहीं से आता है. आपके attachment to the body gives rise to ego, and you can't say कि I don't have any ego. You have an ego. Better understand it. Better realize it. जब तक आप ईगो में हो, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो. बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो फियर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उस बॉडी से बाहर निकलने का पेन होगा ही होगा. चाहे एक्सीडेंट में मरो आप तो पेन होगा, बीमारी से मरो तो पेन होगा, कोई आपको मार दे, मर्डर कर दे तो पेन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपकी बॉडी से आपको बाहर निकाला जा रहा है. यू आर ए सोल एंड यू हैव टू लीव दैट बॉडी. इट इज गोइंग टू बी पेनफुल. सो बेटर अंडरस्टैंड. ओनली थिंग इज, इफ यू improve your karma, then you will be at least reducing the impact of that pain. That's all I can say. Correct? So focus on your karma. Hold on, Vijay ji, मैं आता हूँ आपके पास. पहले एक बार complete कर लूँ. ठीक है जी. So there are two aspects of death that we are talking of. One is death for myself, right? And when somebody else is dying, that is when I am really facing the impact, because I am still in life. मैं अभी इसी लाइफ फॉर्म में हूँ और कोई मेरे को छोड़ के चला गया है. तो कौन सा इमोशन है वहां पे? ग्रीफ. Somebody is leaving me without my permission or without my you can say agreement. Then what happens? I am in grief. अब वो कोई फ्रेंड है मेरा, छोड़ के यूएस जा रहा है, तो भी मेरे को ग्रीफ होता है. मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा दोबारा, उस हिसाब से नहीं मिल पाऊंगा जैसे मिलता हूँ. ठीक है, फोन पे बात हो जाएगी, अलग बात है. करेक्ट? और जब फेस टू फेस हम हैं, बात कर रहे हैं, एंड सडनली वो नहीं है. इनफैक्ट टुडे मॉर्निंग, yesterday, one of my in my family there was a death, and I was in the cremation in the morning for the whole day. So all the thoughts of all the people who had left my life came to me. My parents, my sister, my friends, जिनके मैं cremation पे गया था, जब भी पूरी जिंदगी में गया हूँ, वो सारे thoughts वापस आ रहे थे. And I was completely experiencing that grief. But then I realized कि जो जा रहे हैं वो तो अपनी जर्नी अच्छी करने जा रहे हैं. अब कोई यहाँ से, किसी के पास जॉब नहीं है यहाँ पे, वो यूएस में जा रहा है, बहुत अच्छी जॉब लेके जा रहा है, वो तो अपना अच्छा करने जा रहा है. लेकिन मेरे को ग्रीफ हो रहा है कि वो मेरे से नहीं मिलेगा. इट इज अ सिमिलर थिंग व्हेन समबडी एल्स इज डाइंग.
because उनकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है. They are going to a place where they are going to be in a much better position than here. So we should be happy for them. Yes or no? अगर उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, वो खुश हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, तो you will be happy. So there is no rule that you have to grieve for the person who has left the body or who has left the life form. In fact, there are many communities who celebrate when a soul leaves the body, because it is a matter of a great spiritual event. एक लाइफ फॉर्म छोड़ के दूसरे लाइफ फॉर्म में जा रहे हैं, so it is a celebration for them. It is like you leave an organization and go to a different organization, you get a farewell here. Correct? So it is like a farewell they are giving to their soul कि ठीक है, दूसरी जगह जा रहे हो, खुश रहो, अच्छे रहो, kind of a thing. So who has taught us that we have to cry when person dies? So-called death. Person changes a life form and we are grieving. एक custom है. But if you understand it, that it might be better for that soul, उसकी अगली जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, वो जनरल मैनेजर से मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया है, तो आप खुश होगे ना. तो कंसिडर इट दैट वे एंड योर फेयर कि जो डेथ का जो फेयर है वो थोड़ा सा, या ग्रीफ जो है वो थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं. And if the person is suffering a lot physically, like he's bedridden, he is in coma and all that, he's more like a vegetable. So uski to suffering khatam hoegi na, so it's definitely going to be better than what the present state is. And it is always because you have done so much of karma in this lifetime, next lifetime has to be better. Consider it that way, especially those who are at least सुप्त अवस्था में नहीं है, जो जागृत अवस्था में आ गए हैं, they must have done a lot of good karmas in this lifetime, so next lifetime is going to be much better. Correct? So you can always be happy for the person who is left you. That is one. तो उसका impact थोड़ा कम हुआ, grief का हो गया, है ना. अब अगली बात आती है कि अगर मेरे को जाना है, तो you have to understand, if you are taking care of your karmas, you will pass off very peacefully to the next place, and that place is going to be even more wonderful. Then why are you crying? तो किस चीज का दुख है आपको? अपनी डेथ का भी दुख नहीं होना चाहिए और दूसरे की डेथ का भी दुख नहीं होना. एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे तो ये लेके आओ, then you will be able to face the test properly. And if you live your life properly, then you can pass the examination perfectly. That is the teaching. Right? Yes, Vijay ji, now you can share. आपने वो सब बोल दिया जो मैं बोलना चाहता था शशिधर जी. And the reality is, if you practice and you practice again and again, even formalizing your system with the affirmatives and all, if you practice detachment and you practice gratitude, you will be in that state where you will celebrate when people go, and you are okay when you go. I mean, I don't see any reason why. We are so small and insignificant in the world, and when you look at the galaxies and the stars and all that, we are absolutely insignificant. Why do we think ourselves to be the center of the universe? ये उनके लिए ठीक है जिनका ईगो बहुत बड़ा है और जो अटैच्ड है, और जो बिल्कुल अपने आप को कॉकरोच समझ के जी रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा यू आर डिवाइन. आप अहम ब्रह्मास्मि, you are the universe. So you have to understand these are concepts which are given for the people to come to balance. कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा तो उसको बताना पड़ेगा you are a less than a speck in the, आप एक धूल की एक कण के बराबर हो. बट अगर आपने आप को पहले से ही वो सबकी जूती समझ के बैठा हुआ है, तो उसको ये नहीं बोल सकते, उसको फिर आपको बताना पड़ेगा you are the universe. Correct? God dwells in your heart, you are divine. तो वो अलग है, concepts अलग अलग हैं. You have to understand in whichever way so that you basically have lot of self-esteem for yourself. That is important. Correct? Okay, very good, Vijay ji. You have brought out a few wonderful points. So I hope everybody has understood. Anybody else who wants to discuss anything? So is the concept of reality of life clear? Reality of life is death, and how you relate to death and how you can experience death will be entirely depending on your understanding. So raise your understanding to such a level that there is absolutely no fear of death and there is no attachment, so you'll be free. So that reminds me a story of Buddha, so I'll share that story with you. So once Buddha is on the way, he keeps roaming from one kingdom to another to spread the light, right? So he goes to a place and he is giving his teachings there, and obviously he has many the whole community is
not agreeing with him. So बहुत लोग हैं जो उनके खिलाफ भी थे, especially जो पंडित्स जो who for whom the bread and butter was their scriptures, and he would say scriptures are all, और उससे कुछ नहीं होगा, scriptures पढ़ने से कुछ नहीं होगा, rituals करने से कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा. So they were all angry with him. So there was a case when a young son, मतलब एक मदर है, उसका जवान बेटा जो है वो गुजर गया, and she is absolutely distraught, madly she is crying, बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रही है. तो सबको लगता है कि एक काम करते हैं, इसको बुद्ध के पास भेज देते हैं. हाँ, सो लेट तुमको उनको पढ़ा के भेजते हैं कि तुमको एक ही जना तुम्हारे बेटे को वापस ला सकता है. शी से इसको किसी तरीके से जिंदा कर दो, वैद्य को बुला रही है, डॉक्टर को बुला रही है. तो बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के पास ले आओ, वही एक है जो महात्मा है, वो अवतार है. हाँ, तो तथागत हैं, तो वो तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर सकते हैं. तो लेके पहुंच जाती है. तो शी इज होल्डिंग द डेड सन इन हर आर्म्स and she rushes there, cries lots and और बहुत रोती है, चिल्लाती है कि अब बुद्ध के पास पहुंच जाती है. अब now they know they are playing a trick actually कि भाई ये जिंदा तो कर नहीं पाएगा, ये तो मर गई है. and then they will say कि भाई बुद्ध has failed. that was her part. तो वो वहां जाती है, तो बुद्ध सुनते हैं पूरी बात, कहते इसको जिंदा कर दो, मैं कुछ भी कर दूंगी, ये वो. कहते हो जाएगा, कोई बात नहीं. उसको एक बेगिंग बोल देता है अपना, कहते काम करो, इसमें आपको मैं जिंदा कर दूंगा इसे, आप ये बेगिंग बोल लो और इसमें 2 मुट्ठी चावल एक घर से ले आओ. कहते ये तो मैं ले आती हूँ. कहते हाँ, पर एक पॉइंट है, उनसे बस पूछ लेना कि उनके घर में कभी भी किसी की डेथ नहीं हुई हो, एंड यू गेट दैट एंड आई विल डू द रेस्ट. तो शी सेज फाइन, ग्रेट. तो लेती है, पागलों की तरफ भागते हुए जाती है, हर एक घर में जाती है, घर घर में जाती है, सबसे पूछती है कि 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल चाहिए. हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे जी. आपके घर में कोई डेथ हुई? नहीं नहीं, हुई तो पिछले साल मेरे फादर की डेथ हो गई थी. अगले घर में जाती है, वो भी बोलते हैं पिछले साल या जो भी है 5 साल पहले या किसी की डेथ हुई. कोई कहता अभी मेरे बेटे की अभी इसी साल डेथ हुई है. हर घर में कहीं ना कोई डेथ हुई है. सारे गांव में ढूंढ लेती है वो, सब घरों में जाके पूछ लेती है, कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे डेथ ना हुई हो किसी ना किसी के भी प्रिय जो भी इस घर में रहते हैं, उनके किसी भी प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई. नहीं, ये दैट वाज द कंडीशन. एंड शी रोम्स अबाउट एवरीवेयर एंड शी कम्स बैक. 2-3 घंटे बाद आती है खाली बाउल लेके, कहती है कि ऐसे ऐसे हुआ सबके घर में, तो डेथ हुई है, तो आई कुडंट गेट दैट. बाय दैट टाइम शी हैज रियलाइज्ड दैट डेथ is a practice which is a natural thing to happen. And then he gives her a Gyan, and not only gives her the Gyan of, and this is what she actually says, this सब कुछ temporary है, बाहर की दुनिया में सब कुछ temporary है. Nobody is permanent, no relationship is going to be permanent, no human being is going to be with you for lifetime. ये हमारी एक सोच है कि हम जिंदगी भर के लिए या जो भी आप बोलते हैं साथ रहेंगे. नॉट पॉसिबल. लाइफ बाहर टेम्पररी है, चेंज होती रहती है. यू कैन नॉट लुक फॉर परमानेंस इन द टेम्पररी वर्ल्ड, इट इज ए चेंजिंग वर्ल्ड. वहां पे परमानेंट नहीं ढूंढ सकते कुछ भी. तो यू एक्सेप्ट दैट इट इज गोइंग टू हैपन. सो डेथ इज अ रियलिटी. The reality of life is death. That is where he teaches this. And then she realizes that she falls at his feet and she goes back having got the consolation. तो उसको शांत करके वो तो उसको भेज देते हैं. And जो उसके enemies होते हैं, they are biting their nails कि यार ये तो फिर he has got away, we couldn't do anything. So that was the whole story about, but wonderful story. But the reality of life is death, and it is a big story. तो हम उस समय बहुत attached होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं. So first of all, you need to understand it's a reality of life, correct? And second thing is, it is bound to happen, and it is all karma, cause and effect है. किसको कब जाना है, कैसे जाना है, किस दशा में जाना है, और अगला जन्म कैसे होगा, ये सब कर्म है. तो अपने कर्मों पे ध्यान दें, बाकी सब चीजें भगवान पे छोड़ दें. तो we will be living a very happy life. Yes. So that is the teaching for today, and I hope the message is clear. We will continue the discussion next session also, and then we will see the actual secret of life, how to be actually free from the bondages of death. So we will see that. कैसे आप कौन से रास्ते से चल के बुद्ध ने ये सिखाया,
how you can be free from the bondages of death, and how do you actually unfold the secret of life. Yes. So take away from today. आज के सेशन से क्या सीखा आपने? Anything that you would like to share that has given you as an insight you have got, you can share that, and then we close the session. So Gyan part is over. Anybody who wants to share? किसने अभी तक नहीं बोला है आज कुछ? गीता जी, yes, raise your hand. मैंने बहुत बोला है पहले भी, but I would like to say that yeah, every day, every moment, just work on your karma, and अगर आपका कर्मा ठीक होगा तो आगे तो जो हम देंगे वही तो हमें वापस मिलेगा. So whether in this life or the other life, it's always karma that you need to work on, and बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है, and my thought, my actions, my words. And if I work on that, I think life, this life or the next life, everything is going to be fine. Absolutely perfect. Very good. Let's acknowledge Gita ji. Yes. निवेदिता जी, क्या लेके जा रहे हैं? सेम थिंग सर, जो गीता जी ने बोला वही. आवाज आ गई. जो हमारे हाथ में है वही अपना कर्म है सर. बिल्कुल बिल्कुल. Nothing else. Very good. Like, you know. Thank you. I second you, Gita ji, always. Thank you, ma'am. Very good. Good learning, good wisdom. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir, so much. Advocate Mitra ji, you have invited your guest also today. Anything you want to share? Vande Mataram. I Vande Mataram. thank you for this wonderful platform, and I welcome again. That time I wanted to speak, but somehow this entire thing went for I have to log out, and then the icon started functioning. So thank you, Rima ji, thank you, Sarita ji, Ji, Harsh ji, for joining in. And I want Harsh ji to speak because he is into some big problem, and I think you have that solution for it. So Harsh, please share with Shashi ji. And welcome, sir. You can get in touch with me. Get in touch with me tomorrow. You can send me a WhatsApp message now. I will save your number. Yes, you can see my number here. You can see my number there, 98102924141. You can send me a WhatsApp message. I will get in touch with you. Okay, so Advocate Mitra ji, you have welcomed welcomed 3 guests today, huh? Rima ji, Sarita ji, and Harsh ji. Kishore ji and Harsh. Let's acknowledge. 4. Very good. 4. और कौन है sir? Kishore ji भी हैं. Okay, very good. Yeah. Okay, anybody, all the guests who want to share something, so that you can tell Mitra ji about your participation. Anything you want to share? Sarita ji says, Pranam. Okay. Thank you. Kishore ji, कुछ बताना चाहेंगे? Anybody who wants to share? एक छोटा सा जोक है. आप कर्मा की बात करते हो तो देयर इज दिस हस्बैंड, वो उसको पंडित ने बोला था अब तो ये तुम्हारे साथ 7 जन्मों के साथ है. एंड वो जब उसकी 5 साल 3 साल शादी के हो गए तो वो पंडित जी के पास गया, बोला पंडित जी मुझे सिर्फ ये बता दो ये मेरा कौन सा वाला 7वां जन्म का साथ है कि फर्स्ट वाला है. सो आई विल प्रिपेयर माय सेल्फ अकॉर्डिंगली. सो जन्म कैन आल्सो बी. That is how it was. Yes. See, उसके पीछे भी एक concept है basically, you know. So it is to assure the couples that at least अगर वो 7 जन्मों का साथ बोल रहे हैं तो कम से कम इस जन्म में तो साथ में रहेगी, you know. That is the assurance kind of a thing. Because you never know what is going to happen in the next birth. इतना assurance रहता है, वो 7 जन्मों की बात कर रही है तो कम से कम इस जन्म में छोड़ के नहीं जाएगी. So it is more like a consolation. So you have to understand not everything is gospel truth. Understand it. Mind को शांत करने के लिए भी बहुत कुछ सिखाए जाते हैं. Okay, so we come to the end of the session now. It is scheduled time is just 1 minute away. Anybody who wants to share anything you want to ask? Otherwise, we close the session today. The recording will be posted. The recording will be posted and will be shared with all of you. You can leave your number. जो नए लोग आए हैं, आप अपना number chat box में छोड़ सकते हैं. I will note that number. Yes. विजय जी, मैं आपके पास आता हूँ 1 मिनट. रीमा जी कुछ बोलना चाह रही है. Yes, रीमा जी. Sir, when will be the next session or next class? Wednesday. Every Wednesday 9 o'clock is the session. I've been doing this for the last 4 years, so it will continue like that. Yeah. Okay. New topic every day, and this next topic will be linked to this. We will actually haven't touched the secret part. We have only touched the reality part of life, right? Okay. We have seen today what is the reality of life, which is death. Next time we will see the reality of, no, not the reality. The secret of life is to how to get free from the bondages of death.
that is what will set you free. So we will discuss that in the next session. So welcome, all of you are welcome to attend the session. Same link and same time. Yes, yes, Vijay ji, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? I was just going to say that Rima ji is trying to say something. Okay, that's fine. Thank you. All Shashi right. Dhar ji. It was a great what to say, this entire 1 hour. I never thought, it was not planned. I had no idea that I'm going to join a Zoom session right after my dinner. But I learned a lot from you and would love to hear from you more, and would love to learn more about life and death. Because for me, death, as Geeta ji said, that we all know death is inevitable. It is going to come, and we all are. That is the reality of life. So Constant attitude. we are prepared for that. Therefore, that there is no fear. The fear is actually of pain, which you said, that how we are going to go, how we will have to leave the earth, how long we will have to suffer, what is in store for us, whether we are going to suffer for a long time or whether it is going to be a 1 second activity that we will not be able to understand even that we are gone. But the thing is that we actually fear that pain. It is not that we fear death, but we fear pain. And what we fear is, we think about the people we leave behind. Like if we have small children, our own kids, family, we only think about them, that what will happen to them. That is the thing that bothers us. Correct. Otherwise, So- death is means nowadays that life has become so full of struggle that people would very easily accept death, and there is nothing to fear about it. I think so. Okay, that's good. But in the next Uh, session, we will see how you can be absolutely free from that pain of death for yourself as well as for others. Yeah. Now, your death should Thank not be you. painful for them, and their death should not be painful for you. That is how we are going to look at that. Okay, thank you, Rima ji, for Okay, sharing that. thank you Wonderful. so much. So thank you for Thank you, participation. Kapil ji, also. Kapil ji, thank you for sharing this link with me, because he only helped me to meet all of you. So thank you to him also. Thanks to him. Welcome. Take care. Welcome, and Shukran. thanks for your participation. Thanks for your participation. Be here next week, and you can bring in as many friends as you want, because this is going to be a great discussion. And the recording will be available in the group. And those who want to join our DHV group, leave your numbers. We can add you in that group, and you will be seeing many posts every day, and of course our weekly meet that we do. Thank you very much for your participation. Enjoy a great week. We meet again next week. Till then, Aham Brahmasmi. Take care. Bye bye. Shivoham. Shivoham. Yes.